हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप लोग अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड एमुलेटर इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके लिए हम यूज़ करने जा रहे हैं जेनीमोशन। तो आपको उस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इंग्लिश यूज़ करेंगे। ओके, इंस्टॉल। आप इसके एमुलेटर के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के एंड्रॉयड वर्जन्स के सिमुलेटर्स बना सकते हो। आप में यूज़ कर सकते हो अपने एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ओके, वी हैव दिस। सो इसके लिए हमें ऑरेकल का VM वर्चुअल बॉक्स भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल। इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, ओके, इसको क्लोज कर लेते हैं एंड लॉन्च जेनीमोशन। ये एप्लीकेशन को आप लॉन्च कर लेंगे। देन यू विल हैव दिस इंटरफेस। आप यहाँ पे जाके बेसिकली आप इनकी वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। देन वी विल यूज फॉर पर्सनल। आई हैव रीड। देन नेक्स्ट। ओके, so we can use, like, we can create our new virtual device from here. You can choose custom phone, custom tablet, Google Nexus 10, Google Nexus 4, Google Nexus 5, 7, HTC, Motorola, Samsung, custom phones and all Google phones. You have variety of phones here. You can use any. Okay, for example, I'm choosing this Google Nexus 10. I'll just click on here and then click on next. Google Nexus 10 custom. This is this Android version. I can choose 5, 10. But I will go with 10. Processor 4, memories 2 GB. Okay, network mode NAT. Okay, now then I will go to install. It will take some time. Here it is downloading some files of 440 MB.